Hello students, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 19th of July. The session will be quite interesting and important, so stay tuned with us till the end. If you are new here, do subscribe to us. We are one-stop solution for current affairs, and share the link of this video with your friends, cousins, relatives, neighbors, and let them know about this interesting platform. In this video we are talking about ASI. They have declared Mizoram's Lungfun Ropui as the monument of national importance. Next, we are talking about an MOU that will streamline the KYC verification for the mutual fund investors. Then Trade Connect e-platform has been showcased at 71st IIGC and 16th Toy Biz International Expo that was held in New Delhi. Then BITS Pilani, they have announced to establish India's first AI Plus campus in Amravati, Andhra Pradesh. So all these things and many more will be discussed here, students. And we upload the daily current affairs video at 5 a.m. in the morning on regular basis. It was just a issue today, that's why we are getting delayed. Otherwise, we make sure to upload the daily current affairs at 5 a.m. in the morning on regular basis. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. Let's start with national affairs. ASI, that is your Archaeological Survey of India, they have declared Mizoram's Lungfun Ropui as the monument of national importance. Right? What will happen because of this is we will be conserving this monument, and this makes Lianpui as the second menhir site in Mizoram to get such a recognition. Right, take a note of this. You can see here ASI, that is Archaeological Survey of India, that works under the Ministry of Culture, has officially declared Lungfun Ropui, located in the Lianpui village in southeast of the Champai district in Mizoram, as the monument of national importance. This makes Lianpui village the second menhir site in Mizoram to get such a recognition after, that is your Wangxia, right, also known as this Kachua Ropui. Correct. So this is the second site to get this recognition, that is the monument of national importance. Correct. This village was initially established before relocating to the current site, and this site is famous for the menhirs or ancient carved stone structures that are considered important to understanding the culture and historical roots of the Mizo people. Right, so menhirs are the stones, carved stones. Currently, this site is hosting more than 170 such carved stones of warriors, hunting, music, and communal legends. Then, if we talk about Archaeological Survey of India, who is the Director General here? Yadubir Singh Rawat, and the headquarters of ASI is in New Delhi. Next is Department of Post under the Ministry of Communication and Association of Mutual Funds in India. They have recently signed a memorandum of understanding to streamline the KYC verification for the mutual fund investor. The process here will be made easy, and this MOU will be valid for next 1 year starting from July 2025 onwards, and it ensures strict adherence to the regulations of SEBI that will include the provisions for the data confidentiality and secure the handling of the investor information. Right, this will make investing easier, especially for people in the rural and semi-urban areas, and the MOU will enable the postal employees to assist investors in completing KYC forms, verifying and attesting self-attested documents, and transferring them to the asset management companies. So the process of all this streamlining will become easy, and it will enhance the number of investors also in the Indian market. Next is DGFT, that is your Directorate General of Foreign Trade. They have showcased Trade Connect e-platform at the 71st IIGF and 16th Toy Biz International Expo that was held in New Delhi. Right. So Ministry of Commerce and Industry, they have showcased their what? They have showcased their Trade Connect, that is an e-platform, and it was at the two major B2B trade exhibition. First is your 71st India International Garment Fair,
and second is your 16th Toy Biz International Expo that were held in New Delhi. Correct. This Trade Connect, this is an initiative where it will serve as a comprehensive hub of the information and services on the international trade for all the stakeholders. This platform will provide the recent and updated information on the tariffs, certification, trade events, the e-commerce platforms, what are the certifications required for the MSMEs or any other certification, any other clearances. So everything will be provided on this Trade Connect. Next is BITS Pilani. They have announced to establish India's first AI Plus campus in Amravati, Andhra Pradesh. This new campus will be established with an investment of 1000 crore rupees over a period of 5 years. And the establishment of this new campus is a part of other key initiatives that includes upgrading of existing campus of BITS Pilani, right, and other things. Then in this will be conducted in two phase. The development here will be conducted in two phase. The first will be supporting 3000 students, and the next phase will be in the next phase the capacity will be increasing to 7000 students. Next is Union Minister of State George Curran has launched the Skill Training and Women Entrepreneurship Development Project at IIIT Kottayam. As a part of this initiative, a MOU was also signed between the Ministry of Minority Affairs and IIIT Kottayam to train 450 candidates from the minority communities at IIIT Kottayam. Right, under this initiative, 150 youths will be trained in IoT, that is Internet of Things, and 300 women will be trained in the leadership and entrepreneurship development. Also, it is the Ministry of Minority Affairs that will be bearing the cost here for their training. Next is International Affairs. WHC, that is your World Heritage Committee, it is under UNESCO. They have inscribed 26 new sites on the UNESCO's World Heritage list during the 47th committee meeting that was held in Paris, France. Right, so 20 new sites has been added, out of which 21 sites are cultural importance, 4 sites are natural, and 1 is your mixed site. Correct. Apart from this, the total number of sites in the World Heritage Site list is now 1248. Correct. Take a note of this. Now, from India, Maratha Military Landscape of India was included as the 44th World Heritage Site of India. Right, let me write here Maratha Military Landscape. Right, it was included as the 44th Maratha Military Landscape of India, included as the 44th World Heritage Site of India. Then 4 new sites were from Africa, were added to the UNESCO's World Heritage Site list, and raising from Africa now there are 112. 3 sites were removed from the African sites. We have discussed this also few days back. That is the rainforest of Estiana in Madagascar, Abu Mina from Egypt, and Old Town of Ghadmes from Libya. They were removed from the list of the World Heritage Sites in danger list. Correct. And one more thing, remember students, this is the 47th committee meeting that was held in Paris, France, during which these 26 sites were added. Right, take a note of it. And Maratha Military Landscape of India was added here, and it was kept at the which position? At the 44th position. Next, right, this is basically as the 44th World Heritage Site of India. Right, this is the means from India it is 44th, not in the list. There is no numbering in the list, right? This is first, second, third, or fourth. It's just it keeps on adding, and the total number is now 1278. Right, it just keeps on adding. But the thing that 1248, right, and this 44th means from India this is the 44th site that was added. So from India there are 44 now. Next is awards and recognition. Swachh Sarvekshan 24-25 awards were presented, and Indore has retained the top cleanest city title for the 8th time. So simple and easy question, which is the cleanest city in India? It is Indore from Madhya Pradesh. Right, and this is the 8th consecutive time that Indore has secured this position. It is followed by Surat on 2nd position from Gujarat. One more thing, remember here, this Swachh Sarvekshan, right? It is the world's largest urban cleanliness survey that is evaluating the cities based on waste management, sanitation infrastructure, and public participation. Next is HDFC Bank's Chief Executive Officer Shashidharan Jagdishan emerged as the India's highest paid banker in FY25. Right, take a note of this.
As you can see him in the picture, he is the CEO Shashidhar Jagdishan, and he has emerged as the highest paid banker in India's financial year 2025 with a total salary of 12.08 crore, making an increase of 12% compared to last fiscal year. Second highest paid bank chief in FY25, only after Ashok Vaswani, the MD and CEO of Kotak Mahindra Bank. Correct? If we talk about Ashok Vaswani, he took over as the Chief Executive Officer of Kotak Mahindra Bank Limited, right? And he is earning a total compensation of 12.95 CR. Next is Forbes 50 richest self-made women on earth in 2025 list, and Indian women Falguni Nayyar and Kiran Majumdar Shaw ranked 31st and 32nd on this list. We are talking about Forbes list, and this is the latest edition of the Forbes 50 richest self-made women on earth in 2025 list, and two Indian origin women have been ranked on this list. First, let's talk about the top 3. Rafaela Aponte Diamat of Switzerland, $38.8 billion from shipping sector. Then Diana Hendricks from USA, $22.3 billion in the building supplies. Then third is Zhang Huizhan from China, $15.6 billion in pharmaceutical sector. These are the top 3 in the list here. Then if we talk from India, Falguni Nayyar of India, $3.4 billion in retailing. And on 32nd position is Kiran Majumdar Shaw from India at $3.3 billion in the biopharmaceutical sector. Next is SBI educated the world's best consumer bank 2025 by Global Finance magazine. What does this mean is that SBI, it has been educated as it has been marked as the world's best consumer bank for 2025 by Global Finance magazine, right? This Global Finance magazine, it is a leading international financial publication, and after a lot of finance executives came together, did analysis, and various banking professionals came together, worked upon this report, then this statement has been released. The award will be formally presented to the chairmen of SBI, that is CS Sethi, on 18th of October. Correct? And if we talk about this, SBI has demonstrated leadership in the consumer banking segment through various expansion of mobile banking infrastructure, integration of the cutting edge technologies such as AI, then continuous focus on consumer engagement and accessibility, strengthening 24/7 digital support services also, and many more. Next is appointments and resignation students. Yulia Anatolievna has been appointed as the new Prime Minister of Ukraine. As you can see here in the picture, Yulia Anatolievna, she has been appointed as the new, and yesterday also I asked you this question in the homework section, right? She has been appointed as the new Prime Minister of Ukraine, right? We know the war is going on right now between Ukraine and Russia, and now she has become the Prime Minister there, and she is the second women Prime Minister of Ukraine. Next, former CBDT chairman Nitin Gupta appointed as the chairperson of NFRA. What is NFRA? National Financial Reporting Authority, right? This comes under the Ministry of Corporate Affairs, and he will serve for a term of 3 years. His term will be starting immediately, and he has succeeded Ravneet Kaur. Next is science and technology. Indian Army has conducted Akash Prime missile system at high altitude in Ladakh, right? And in Ladakh also, if you remember, NTPC, they have launched hydrogen powered buses, correct? Then coming back, this Akash Prime missile system, it was tested in Ladakh with an altitude was of almost 4,500 meter. This was a 2-day long trials. It was tested by Indian Army, right? And this Akash Prime missile system, this is the upgraded version of the Akash weapon system. And here only, if we see, these trials were conducted by Indian Army's Corps of Army Air Defense in collaboration with DRDO, then industry partner Bharat Dynamics Limited and Bharat Electronics Limited. This Akash Prime, it is developed by DRDO. This is an medium range surface to air missile system that is designed to intercept the aerial targets at high altitudes, right? Also in July only,
India has test fired two nuclear capable short range ballistic missiles. They are Prithvi the second and Agni 1. Right? So Prithvi 2 and Agni 1, that are nuclear capable short range blasting missiles, were also tested. They were tested at the ITR in Chandipur, Odisha. Next is related to sports students. Aditi Chauhan, Indian women football team goalkeeper, has announced retirement, as you can see her in the picture recently. Right? And she had a 17-year career and now she has announced retirement. She is 32 years of age and she signed with West Ham United Ladies, that is World Super League England, in 2015, playing in England until 2018 before she returned to India and then joined India's hockey team, and now she has retired. Next is important is Nelson Mandela International Day, observed on 18th of July. Take a note of this day. Right? Nelson Mandela was the face when we wanted to remove apartheid for the system. Apartheid was basically the discrimination against the blacks by the whites. Right? So he did his best at that time and he made sure that the people are equal. He ensured the right for the people. What Mahatma Gandhi did in India, he did in South Africa. Right? So this day it commemorates the birth anniversary of the Nobel Prize winner Nelson Mandela, the first black president of South Africa, and he won Nobel Prize in 1993. The theme for this day is "It's still in our hands to combat poverty and equity." Next is state news, students. UP government has partnered with UNDP to strengthen the disaster management in Uttar Pradesh. I repeat, UP government, they have partnered with United Nations Development Program and signed a memorandum of association to implement disaster risk reduction programs. And the UP government, they have also allocated a budget of 19.99 CR rupees that will be allocated in a phased manner or deployed in a phased manner over the next 3 years. And this agreement, it will be covering 75 districts of UP in this program. So that's all for the day, students. Now let's move to the revision part. It will be beneficial for your learning. Next, Odisha government has launched which initiative for fostering inclusive, sustainable and innovative urban growth in Bhubaneswar, Odisha? Name of the plan is, or the name of the initiative is Ankur. Ankur is Atal Network of Knowledge, Urbanization and Reform. This is a strategic initiative for fostering inclusive, sustainable and innovative urban growth in Bhubaneswar, Odisha. Right? Next, name the initiative or name the event inaugurated by Dr. Mansukh Mandviya on June 3rd at India Habitat Center in Delhi, which included the launch of landmark books on cycling. Which is it? Name that event. The event is Urban Adda 2025 Conclave. And this was held from 3rd to 5th of June and launched the landmark books on cycling at India Habitat Center in New Delhi. This event was organized by New Delhi based Rahagiri Foundation in partnership with Washington DC based ICCT, that is your International Council on Clean Transportation. Right? Then this Urban Adda 25, it features various thematic sessions on climate resilient cities, gender and mobility, clean and water waste management, inclusive transport, and also to meet the sustainable development goals and promote cycling. Next, in June, which state government launched Rajiv Gandhi Van Samvardhan Yojana and the Green Adoption Scheme with the aim to enhance green cover and promote community participation in the state? It is Himachal Pradesh, right? This is the state government that has launched this Rajiv Gandhi Van Samvardhan Yojana and also the Green Adoption Scheme, right? Next is in June, which two wetlands in Rajasthan were newly designated as the Ramsar sites as announced by Union Minister for Environment, Forest and Climate Change Bhupendra Yadav. So which two wetlands are we talking about? It is Khichian and Menar. These are the two wetlands, right? This Khichian, it is in Pahalodi and Menar is in Udaipur, right? And these are the two wetlands of Rajasthan declared as Ramsar sites. And now Rajasthan state has a total of 4 Ramsar sites now. And India
India has a total of 91 Ramsar sites. Next, the Department of Biotechnology observed Swachhta Pakhwada 25 from 1st of May to 15th of May in Delhi, and this Swachhta Pakhwada was conducted under which mission? So this Swachhta Pakhwada was conducted under Swachh Bharat Mission Urban 2.0 to make our cities clean, and this Pakhwada was organized in accordance with Swachhta Pakhwada 2025 that was issued by the Cabinet Secretary of the Government of India. And this Swachhta Pakhwada, right, this is the initiative of the Government of India that was launched in April 2016, under which different ministries and departments, they come together to observe a 2-week period dedicated to intensive cleaning activities. Next is which state in India achieved 100% success rate in the foundational literacy and numeracy assessment test under the Ullas Nav Bharat Sashaktra Karyakram in June 2025. 100% success rate in the foundational literacy and numeracy. It is Tamil Nadu. Next, name the application enhanced by the Election Commission of India on 4th of June to provide real-time voter turnout updates. So what is the name of that application? It is Election Commission Network and Information Technology. This launch aligns with the Election Commission of India's commitment to timely public communication, which is the highest priority. Even now, there was a news that Bihar became the first state. Why? Because they will be conducting elections on mobile application. Next, who launched Ek Ped Maa Ke Naam 2.0 initiative along with special modules and eco clubs for Mission Lives, that is Lifestyle for Environment. This is a web portal launched on 5th of June. So, who launched it? It was launched by Union Minister for Education, Dharmendra Pradhan. And this Ek Ped Maa Ke Naam initiative, it is a nationwide environmental initiative that will promote tree plantation drive. Next, what is the revised minimum land requirements in hectares for setting up semiconductor manufacturing unit in multi-product SEZ as per the Special Economic Zones Amendment Rule of 2025 as notified by the Ministry of Commerce and Industry? So what is the revised minimum land requirement? It is 4 hectares. Next, in June, which state government in partnership with Setu Ayog, that is State Institute for Empowering and Transforming Uttarakhand, has signed 3 strategic agreements with Tata Trust, National Association of Software and Service Companies, that is NASSCOM, and Vadhwani Foundation with an aim to establish the states as a hub for digital talent and emerging technologies. So, which state government in partnership with Setu Ayog, Institute for Empowering and Transforming Uttarakhand, has signed these 3 strategic agreements? Right? Which state government? It is Uttarakhand state government. Next, who inaugurated India's first commercially approved utility scale 20 megawatt by 40 megawatt per hour battery energy storage system in South Delhi in May 2025? Who inaugurated it? It was inaugurated by Delhi Power Minister Ashish Sood. This facility is South Asia's largest grid connected battery energy storage system project, and it marks the first utility scale storage system in India to receive commercial approval. Next, where did Tamil Nadu government notify the creation of the Greater Flamingo Sanctuary covering 524.78 hectares on the occasion of the World Environment Day observed on 5th of June in 2025? So, where did Tamil Nadu government notify the creation of this? It was in Dhanuskodi, right? This sanctuary was inaugurated by M.K. Stalin, the Chief Minister of Tamil Nadu. Next, in June, the government of Assam and Meghalaya announced a joint initiative to establish a 55 megawatt hydropower and irrigation project on which river that will help in meeting water and energy needs and mitigation urban flooding in Guwahati, Assam. It is Kulsi River. Correct? And the project will generate electricity for both the states, with Assam receiving additional irrigation benefit also. Next, Tamil Nadu's Chief Minister M.K. Stalin virtually inaugurated 2 industrial facilities that are established by Dash and SOL India Private Limited at a combined investment of 475 crore rupees that will strengthen the Tamil Nadu's manufacturing and industrial ecosystem. So,
M.K. Stalin, he virtually inaugurated two industrial facilities that are established by Agile Robots SE and SOL India Private Limited at a combined investment of 475 crore rupees. Next, during the first International Agri Hackathon held in June, Union Minister Shivraj Singh Chauhan announced the launch of Clean Plant Program to establish 9 horticultural facilities across India. Right, and this Clean Plant Initiative, it will get expert technical assistance from countries such as Israel and Netherlands, right? And while the addressing the event, the Chief Minister of Maharashtra Devendra Fadnavis has also announced the plan to use the state government's 120 crore startup dedicated fund of funds along with the government of India's fund to provide incubation and financial support for translating participant ideas into a scalable startup. So basically to help the startups here. Next, students, is our homework section. First, when do we observe National Doctors Day? Give me the day, the theme also. Second, World Zoonosis Day, the day and the theme also. Third, Chartered Accountant Day, the day, edition and the theme. Fourth, tell me recently, name the biography of Dalai Lama that has been recently released and the author also. Fifth question, tell me recently who became the first Indian actress to honored on the Hollywood Walk of Fame of class 2026. Name that actress. So these are your 5 homework questions, students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 19 जुलाई के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। एएसआई ने डिक्लेयर किया मिजोरम की एक साइट को एज द मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, उसको डिस्कस करेंगे। देन डीओपी ने अभी एक एमओयू साइन किया है ताकि जो केवाईसी वेरिफिकेशन है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए, उसको स्ट्रीमलाइन किया जा सके। ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म अभी लॉन्च किया गया एंड इंडिया का पहला एआई प्लस कैंपस स्टैब्लिश किया जाएगा अमरावती आंध्र प्रदेश में बिट्स पिलानी के द्वारा। ये बिट्स की ही ब्रांच रहेगी यहाँ पर। तो दोस्तों, ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एंड इनके अलावा और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। अगर आप नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड शेयर कर दो इस वीडियो को सबके साथ। ऑल्सो हम सुबह 5 बजे ये वीडियोस अपलोड करते हैं स्टूडेंट्स। आज थोड़ा डिले हो गया ड्यू टू सम इशू, वरना हम सुबह 5 बजे डेली बेसिस पे ये वीडियोस लाते हैं जिससे आपकी लर्निंग स्ट्रांग हो सके। Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. चलिए स्टार्ट करते हैं नेशनल अफेयर से। एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आते हैं एंड इन्होंने डिक्लेयर किया मिजोरम की लुंगफुन रोपोई को एज द मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड ये आपका कहाँ पर है? ये लियनपुई विलेज में हमें देखने को मिलती है एंड ये सेकेंड महनीर साइट बनी है। अब ये महनीर साइट क्या होती है? महनीर होती है जो आपके कार्व्ड स्टोन्स होते हैं, राइट, उसको महनीर साइट कहते हैं। ये मिजोरम में है जिसको ऐसा रिकॉग्निशन मिला है, करेक्ट। यहीं पर आपको देखेंगे कि जो ये साइट्स हैं, कार्व्ड स्टोन्स हैं, इस पर आपको कल्चरल इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगी, इसीलिए यहाँ पर ये साइट फेमस है एंड इसीलिए यहाँ पर इस साइट को मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंट घोषित करा गया। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर डीओपी, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आता है। इन्होंने एक एमओयू साइन किया एएमएफआई, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के साथ, ताकि केवाईसी वेरिफिकेशन को स्ट्रीमलाइन किया जा सके फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स।
करेक्ट। इससे क्या होगा, जो ईज है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में वो बढ़ेगी। एंड इवन इन द रिमोट एरियाज, रूरल एरियाज में भी यहाँ पर हम देखेंगे लोगों का पार्टिसिपेशन यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखेगा। एंड जो प्रोसेस होती है किसी भी केवाईसी करने की, नो योर कस्टमर की, वो स्ट्रीमलाइन होगी, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को ऑन बोर्ड कर सकेंगे, राइट। सो टेक अ नोट ऑफ इट। देन तो यहाँ पे डीओपी ने साइन किया है एमओयू टू स्ट्रीमलाइन द केवाईसी वेरिफिकेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं डीजीएफटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है। इन्होंने शोकेस किया डिजिटल इनिशिएटिव ट्रेड कनेक्ट को, जो कि एक ई प्लेटफॉर्म है, राइट। एंड एट द 2 मेजर B2B ट्रेड एग्जीबिशन इसको लॉन्च किया गया था। पहला था 71st इंडिया इंटरनेशनल गारमेंट फेयर, एंड दूसरा आ जाता है 16th एडिशन ऑफ टॉय बेस इंटरनेशनल एक्सपो। ये दोनों कहाँ पर हुए, न्यू दिल्ली में हुए। एंड इन दोनों के दौरान ये ट्रेड कनेक्ट को लॉन्च किया गया। ट्रेड कनेक्ट बेसिकली क्या करेगा, ये आपका एक इनिशिएटिव है जो कि इंफॉर्मेशन का हब रहेगा। सर्विसेज यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी। एंड जैसे मान लो आप बिजनेस कर रहे हैं तो क्या टैरिफ लगेगा वहाँ पर, सर्टिफिकेशंस की क्या ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या अप्रूवल्स चाहिए, कहाँ पे कौन सा ट्रेड इवेंट हो रहा है, राइट, कहाँ पर बायर्स हैं, राइट, कहाँ पर हमें एमएसएमईज को क्या क्या गाइडलाइंस हैं, उनको क्या क्या अप्रूवल्स हैं, तो वो सारी चीज़ें इस ट्रेड कनेक्ट पे हमें देखने को मिलेगी। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर बिट्स पिलानी। इन्होंने अनाउंस किया टू इस्टेब्लिश इंडिया का पहला AI प्लस कैंपस अमरावती आंध्र प्रदेश में, राइट। ये जो नया कैंपस है इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1000 करोड़ रुपीज ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years। एंड ये आपका AI इनकॉर्पोरेटेड रहेगा। AI से रिलेटेड काफ़ी सारी बेनिफिशियल चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी, जो कि बच्चों के, स्टूडेंट्स के ग्रोथ में काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जॉर्ज क्यूरियन। इन्होंने लॉन्च किया स्किल ट्रेनिंग एंड वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को IIIT कोट्यम में। तो जॉर्ज क्यूरियन जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, इन्होंने लॉन्च किया एक स्किल ट्रेनिंग एंड वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को अंडर प्रधानमंत्री विकास स्कीम, जो कि है प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन स्कीम। इसको लॉन्च किया गया कहाँ पर, IIIT कोट्यम में इन केरला, राइट। इससे क्या होगा, 450 कैंडिडेट्स को यहाँ पे ट्राइन किया जाएगा अंडर माइनॉरिटी अफेयर्स। एंड जो खर्चा होगा वो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स यहाँ बियर करेगी। इवन 150 यूथ्स को यहाँ पे IoT की स्किल्स में ट्रेन किया जाएगा। एंड 300 वीमेंस को ट्रेन किया जाएगा इन द फील्ड ऑफ लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट इंटरनेशनल अफेयर्स पर आते हैं स्टूडेंट्स। वर्ल्ड हेरिटेज काउंसिल, ये यूनेस्को के अंडर ही आती है, राइट। और वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, इन्होंने अभी 26 नई यूनेस्को साइट्स को ऐड किया इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ड्यूरिंग द 47th कमेटी मीटिंग, जो कि पेरिस फ्रांस में थी। यहाँ पे जो 44th इंडियन साइट ऐड की गई है वो इंपॉर्टेंट रहेगी हमारे लिए, वो है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया, जो कि 44th वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है इंडिया की। तो इंडिया में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, 44 हैं। 44th कौन सी बनी है, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। 26 टोटल नई ऐड की गई हैं, जिसमें से 21 कल्चरल हैं, 4 नेचुरल हैं, एक मिक्स साइट रहेगी। 4 साइट्स अफ्रीका से ऐड की गई, जिसका टोटल 112 हो गया। एंड अफ्रीकन साइट से ही 3 साइट्स को, अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर की लिस्ट में से 3 साइट्स को रिमूव किया गया है। वो कौन सी है, रेन फॉरेस्ट ऑफ द एस्टियाना मेडागास्कर, अबूमीना एंड ओल्ड टाउन ऑफ द घाडामेज ऑफ लीबिया। इन साइट्स को रिमूव किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर से। नेक्स्ट अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन पर आते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 24-25 अवार्ड्स की बात करें तो इंदौर ने रिटेन किया टॉप क्लीनेस्ट सिटी फॉर द 8th टाइम। इंदौर कहां पर है, मध्य प्रदेश में। इसके बाद आ जाता है सूरत ऑन 2nd पोजीशन, राइट। सो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी कौन सी है, इंदौर है। एंड इट इज द 8th कॉन्जिक्यूटिव टाइम इन्होंने यहाँ पे इस पोजीशन पे और फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे सिक्योर करा, राइट। यहाँ पर अगर हम देखें तो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, जो कि क्लीनलीनेस की बात करता है अर्बन एरियाज में, उसका 9वां एडिशन था 24-25 में। रिड्यूस रीयूज रिसाइकल के ऊपर बात की गई, जो कि 3 Rs हैं। एंड एम रहेगा कि इंडिया में जो 4500 प्लस सिटीज़ हैं वहाँ पर हम उनको क्लीन कर सकें, उनके ऊपर सफाई अभियान में और ज़ोरों शोरों से काम कर सकें। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर HDFC बैंक के CEO शशिधर जगदीशन। ही एमर्ज एज द इंडिया के हाईएस्ट पेड बैंकर इन FY25।
FY25 के ये हाईएस्ट पेड बैंकर बन गए हैं, तो आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। एंड इनकी सैलरी थी 12.08 CR, मार्किंग एन इंक्रीज ऑफ 12% कंपेयर टू FY25, राइट। 24 ये हाईएस्ट पेड बैंकर बन गए हैं, राइट। अगर मैं पूछूं हाईएस्ट पेड, और एक देखो दो चीज़ें हैं, एक तो है ये हाईएस्ट पेड बैंकर, मैं लिख ही देता हूं, हाईएस्ट पेड बैंकर बने हैं। दूसरा ये बने हैं सेकंड हाईएस्ट पेड बैंक चीफ, राइट। हाईएस्ट पेड बैंकर एंड सेकंड हाईएस्ट पेड बैंक चीफ, राइट। हाईएस्ट पेड बैंक चीफ कौन है? वो है अशोक वासवानी। अशोक वासवानी की अगर हम बात करें, ये CEO हैं कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के, एंड इनका कंपनसेशन था 12.95 CR। मूविंग ऑन, फिर आ जाते हैं फॉर्ब्स की 50 रिचेस्ट सेल्फ मेड वीमेन ऑन अर्थ की लिस्ट रिलीज की गई, जहां पे 2 इंडियन वीमेन लिस्ट हुई हैं यहाँ पर, फाल्गुनी नैयर एंड किरण मजूमदार शॉ, जो कि 31st एंड 32nd पोजीशन पर हमें देखने को मिली। फर्स्ट पर आप देख सकते हैं, सेकंड पे देख सकते हैं, राइट, एंड थर्ड पर ये टॉप 3 है। एंड हमारी लिस्ट इंडिया से जो आई है, फर्स्ट पर 31st पोजीशन पे फाल्गुनी नैयर एंड 32nd पोजीशन पे किरण मजूमदार शॉ। तो ये है फॉर्ब्स 50 रिचेस्ट सेल्फ मेड वीमेन की लिस्ट ऑन अर्थ। नेक्स्ट आ जाते हैं SBI एडजस्ट एज द वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 बाय ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन। देखो ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन बेसिकली ये आपकी एक ग्लोबल मीडिया कंपनी, ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ये बेसिकली आपकी एक मैगजीन कंपनी है जो कि एक लीडिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल पब्लिकेशन है, एंड काफ़ी एनालिस्ट एंड बैंकिंग प्रोफेशनल के थ्रू ये डाटा सामने आता है, ये रिपोर्ट बनती है। ये जो रिपोर्ट बताती है कि कंज्यूमर सर्विसेज को अगर हम ध्यान में देखें तो SBI वन ऑफ द बेस्ट बैंक सामने निकल के आया है, वर्ल्ड का बेस्ट कंज्यूमर बैंक है। यहाँ पर इन्होंने अपना जो फोकस किया है कस्टमर एंगेजमेंट पे, उसके लिए मोबाइल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने बनाया है, AI की सर्विसेज इंटीग्रेट की गई हैं, यहाँ पर 24/7 डिजिटल सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है रूरल एरियाज में, सेमी अर्बन एरियाज में, जिससे इनको ये यहाँ पे सम्मानित करने की बात की गई। एंड CS सेठी जो कि चेयरमैन है SBI के, उनको सम्मानित किया जाएगा 18 अक्टूबर 2025 को विद दिस अवार्ड। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन पर। यूलिया एनाटोलिविना, राइट, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, ये अपॉइंट की गई हैं नई प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूक्रेन। ये सेकेंड वीमेन बनी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूक्रेन, एंड हम जानते ही हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में भी जो वॉर चल रही है, वॉर लाइक सिचुएशन के बीच में ये अपॉइंटमेंट की गई। नेक्स्ट आ जाते हैं फॉर्मर CBDT चेयरमैन नितिन गुप्ता, अब ये अपॉइंट किए गए हैं चेयरपर्सन ऑफ NFRA विद इमीडिएट इफेक्ट। ये 3 साल के लिए इस पोजीशन पे रहेंगे, एंड ये सक्सीड किनको करेंगे? ये सक्सीड करेंगे रवनीत कौर को। नेक्स्ट फिर आ जाते हैं साइंस एंड टेक पर। इंडियन आर्मी ने कंडक्ट करा आकाश प्राइम मिसाइल सिस्टम का टेस्ट एट एन हाई ऑल्टीट्यूड इन लद्दाख। 4500 मीटर्स की हाइट पे इसको टेस्ट किया गया, एंड ये अपडेटेड वर्जन रहेगा आपका आकाश मिसाइल सिस्टम्स का, राइट। एंड ये 2 दिन का ट्रायल था। यहीं पे अगर हम देखें तो आर्मी, इंडियन आर्मी कॉर्प्स ऑफ द आर्मी एयर डिफेंस, इन्होंने DRDO के साथ मिलकर भारत डायनेमिक्स लिमिटेड एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर ये टेस्ट कंडक्ट करा। एंड ये जो आकाश प्राइम सिस्टम है इसको DRDO के द्वारा डेवलप किया गया, जो कि एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम रहने वाला है। यहीं पे अगर हम देखें इंडिया के द्वारा अभी जुलाई में ही शॉर्ट रेंज ब्लास्टिक मिसाइल्स लॉन्च की गई थी, टेस्ट की गई थी, जो एंड टेस्ट फायर की गई थी, जो कि है पृथ्वी 2 एंड अग्नि 1। तो ये 2 शॉर्ट रेंज ब्लास्टिक मिसाइल्स भी आपको याद रखना है, ये न्यूक्लियर कैपेबल शॉर्ट रेंज ब्लास्टिक मिसाइल्स हैं जो कि इंडिया के द्वारा भी लॉन्च की गई। फिर आ जाते हैं स्पोर्ट्स पर स्टूडेंट्स। आदिति चौहान ये इंडियन वीमेन फुटबॉल टीम गोलकीपर हैं, जिन्होंने भी अनाउंसमेंट रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी है। ये इंग्लैंड में थी पहले, वहाँ पे उनके क्लब्स के लिए खेलती थी, वापस फिर ये 2018 में इंडिया में आ गई, देन ये इंडिया के फुटबॉल टीम में हो गई, इंडियन वुमेन्स फुटबॉल टीम में गोलकीपर बन गई आदिति चौहान, यानी इन्होंने अभी रिटायरमेंट ले ली है। फिर आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज पर। नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे 18 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। ये डे ऑब्जर्व किया जाता है ताकि जो नेल्सन मंडेला है उनकी बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट किया जा सके। इनको 1993 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जा चुका है फॉर प्रमोटिंग पीस। ये पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के, एंड अपार्थाइड के खिलाफ इन्होंने बहुत काम किया था, जो कि था अपार्थाइड था बेसिकली जो ब्लैक्स के खिलाफ जो हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता था बाय द वाइट्स इन साउथ अफ्रीका, राइट। जैसे इंडिया में गांधी जी थे तो वैसे ही साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला थे।
तो ये है आपका नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे 18 जुलाई को। इसकी थीम याद रखेंगे, इट्स स्टिल इन आवर हैंड्स टू कॉम्बैट पॉवर्टी एंड इनइक्विटी। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेट न्यूज। यूपी गवर्नमेंट ने पार्टनर किया यूएनडीपी के साथ टू स्ट्रेंथन द डिजास्टर मैनेजमेंट इन उत्तर प्रदेश। यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है यूपी की वो बेटर की जाएगी एंड जो मल्टी टीयर डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम है उसके ऊपर काम किया जाएगा, उसको एडवांस करने का काम किया जाएगा यहाँ पे। इसी के अंडर हम देखें तो गवर्नमेंट ऑफ यूपी 19.99 सीआर यहाँ पे फंड करने की बात कर रही है, जो कि डिप्लॉय किया जाएगा इन अ फेज मैनर ओवर द नेक्स्ट 3 years टू स्ट्रेंथन द इकोसिस्टम। ठीक है, एंड यहाँ पर 75 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी वो कवर की जाएंगी एंड उनके ऊपर काम किया जाएगा डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर, देन चलेंगे होमवर्क सेक्शन पर। किस ऑर्गेनाइजेशन ने कोलैबोरेट किया गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ के साथ इन मार्च 2025 टू बूस्ट स्किल डेवलपमेंट, जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड स्ट्रेंथन द स्टेट का आईटी सेक्टर? तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने कोलैबोरेट किया? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज के साथ यहाँ पे टाई अप किया गया। फिर आ जाते हैं एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प। ये पूछा जा रहा है, ये चौथा एडिशन है एक्सरसाइज का, जो कि एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है। ये आपकी 1 अप्रैल से 13 अप्रैल तक हुई। पूछा जा रहा है किस कंट्री के साथ कोलैबोरेट किया इंडिया ने इस एक्सरसाइज में, तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एंड यहाँ पे इंडिया की तरफ से INS जलश्वा का पार्टिसिपेशन देखने को मिला। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इन्होंने इशू की एक न्यू नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द रिवाइज्ड वेजेस अंडर मनरेगा फॉर FY26। एज पर द नोटिफिकेशन जो नया डेली वेज पर पर्सन है 1 अप्रैल से जो स्टार्ट हो गया वो कितना है? वो है 370 रुपीज़। ये पहले 349 था, जो कि बढ़ के अब 370 रुपीज़ पर पर्सन हो गया पर डे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो स्टेट को वेयर द क्लीन एनर्जी प्लेयर वारी एनर्जीज लिमिटेड, इन्होंने सेटअप किया इंडिया का लार्जेस्ट सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी विद अ 5.4 गीगावाट कैपेसिटी मार्च 2025 में। तो गुजरात में ये प्लांट इस्टेब्लिश किया गया $350 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे। फिर आ जाते हैं इन मार्च यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने डिलीवर किया एक की नोट एट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एनुअल मेमोरियल लेक्चर ड्यूरिंग द कौन सा फाउंडेशन डे ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन न्यू दिल्ली में। तो ये 71st फाउंडेशन डे था ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसके दौरान ये लेक्चर डिलीवर किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं आइडेंटिफाई द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्लांट इन इंडिया, जिसको इनॉग्रेट किया गया गुजरात चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल जी के द्वारा इन गुजरात ऑन द फाउंडेशन डे ऑफ गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड। तो वो क्लोरोटूलिन प्लांट है। यहाँ पे आपके क्लोरीन से रिलेटेड उसके डेरिवेटिव्स बनाए जाएंगे, जो कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स रहेंगे एंड इंडिया की वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की चेन में इसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। इससे हमारा जो इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंस है वो ख़त्म हो जाएगा, बल्कि हम अब एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे इसको अपनी लोकल कंजप्शन की जो डिमांड है उसको पूरा करके। नेक्स्ट आ जाते हैं व्हाट इज द थीम फॉर 2025 इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, जो कि ऑब्जर्व किया गया 21 जून को एज अनाउंस बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। पहली बार इस डे को 2015 में अनाउंस किया गया था एंड इस बार की थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो उस डिजिटल प्लेटफॉर्म को जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया ताकि मॉनिटर कर सके रियल टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ एंटी रेबीज वैक्सीन एंड एंटी स्नेक वेनम वैक्सीन को अक्रॉस इंडिया। मान लो 2 हेल्थ सेंटर्स हैं, एक के पास कोई भी एंटी स्नेक वेनम या एंटी रेबीज वैक्सीन खत्म हो गई, लेकिन उसको पता है कि इस दूसरे सेंटर के पास बी सेंटर के पास अवेलेबल है, तो इनके कॉन्टैक्ट करके इसको मंगा सकते हैं। ये कैसे पता होगा? जब प्रॉपर एक डाटाबेस मेंटेन किया जाए, रियल टाइम डाटाबेस मेंटेन किया जाए कि हाँ सो एंड सो लोकेशन पे आपको ये दवाइयाँ मिल सकती हैं, ये वैक्सीन मिल सकती हैं, क्योंकि ये बहुत एट अ टाइम ज़रूरत पड़ती है इनकी और ये तभी लगानी पड़ती है। करेक्ट? तो ये ज़ूविन ये पोर्टल ये काम करेगा जहाँ पे ये रियल टाइम अवेलेबिलिटी बताएगा ऑफ दीज वैक्सीन्स। नेक्स्ट, व्हाट वाज द डिनोमिनेशन ऑफ अ स्पेशल पोस्टेज स्टैम्प, जो कि अनवेल किया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम के द्वारा 1 अप्रैल को टू कमेमोरेट द 90th एनिवर्सरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कहाँ पर? नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में इन मुंबई। तो 5 रुपये का ये डिनोमिनेशन था ऑफ दिस स्पेशल पोस्टेज स्टैम्प। नेक्स्ट, देन निर्मला सीतारमन मैम, इन्होंने नीति NCAER स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम को लॉन्च किया, जो कि एक पोर्टल है, पोर्टल मतलब वेबसाइट है। 3 डेकेड्स का यहाँ पे डाटा हमें देखने को मिलेगा, 1990 से लेके 2022-23 तक का ये डाटा यहाँ पे दिखाया जाएगा। इस डाटा से होगा क्या बेसिकली आपका कि जो डाटा होगा ना ये आपके सोशल इकोनॉमिक एंड फिजिकल पैरामीटर्स को कवर करेगा और यही क्वेश्चन पूछा गया है।
ये विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स आर कवर्ड बाय द पोर्टल। तो ये आपके पैरामीटर्स कवर करेगा जिससे डिसीजन मेकिंग और बेटर होती हुई हमें दिखेगी। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इन्होंने अनाउंस किया रिकॉर्ड ब्रेकिंग एडिशन ऑफ 25 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो ऐड की गई FY25 में। नेक्स्ट आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजनल एस्टिमेट्स फ्रॉम इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन, किस पोर्ट अथॉरिटी ने मेंटेन किया हाईएस्ट कार्गो हैंडलिंग अमंग द इंडियन मेजर पोर्ट्स इन FY25? तो वो पोर्ट कौन सा रहेगा? वो है पारादीप पोर्ट अथॉरिटी। ये कहाँ पर है? ये ओडिशा में है। एक और चीज़ याद रखेंगे, वो पहला पोर्ट कौन सा बना जिन्होंने 200 मिलियन मैट्रिक टन ऑफ कार्गो हैंडलिंग को अचीव कर लिया है? वो है मुंद्रा पोर्ट। मुंद्रा पोर्ट कहाँ पर रहेगा? ये मुंबई में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द स्टेट विद द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर एनक्रोचमेंट, मतलब घिरा जा चुका है वो फॉरेस्ट, एज पर द रिपोर्ट सबमिटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज टू द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इन मार्च। तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट पे एनक्रोचमेंट कहाँ देखने को मिलती है? मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। फिर आ जाते हैं, मेंशन द टाइप ऑफ रेलवे व्हीकल दैट इंडिया मैन्युफैक्चर्ड। 1681 ये व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करी जो कि हाईएस्ट है इन US, यूरोप, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में अगर हम देखें तो ये है लोकोमोटिव। सबसे ज़्यादा लोकोमोटिव जो कि है 1681 लोकोमोटिव्स इंडिया के द्वारा इस बार मैन्युफैक्चर किए गए, प्रोड्यूस किए गए। नेक्स्ट, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया 2 की रिफॉर्म्स, राइट, जो कि आपका काफ़ी बेनिफिट रहेगा सेटलमेंट प्रोसेस में। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स हैज़ EPFO रिमूव्ड कंप्लीटली फॉर ऑनलाइन क्लेम फाइलिंग्स। तो अगर हम यहाँ पे देखें, चेक लीफ एंड अटेस्टेड बैंक पासबुक, ये दोनों चीज़ यहाँ पे लाई गई। नेक्स्ट, अभी इंडियन नेवी ने साइन किया एक प्रोजेक्ट सैंक्शन अंडर द मेक वन कैटेगरी, किसके साथ? ये किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स के साथ साइन किया गया फॉर द डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ अ 6 मेगावाट मीडियम स्पीड मरीन डीजल इंजन के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, फिर किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया स्कूपिंग स्टडी जो है हाउ डज क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट वीमेन एंड चिल्ड्रन अक्रॉस एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स इन इंडिया इन अप्रैल। तो ये वीमेंस एंड चिल्ड्रन के ऊपर क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट रहता है उनकी डे टू डे लाइफ में, उनकी सोशल लाइफ में, राइट, उसके बारे में यहाँ पे स्टडी रिलीज की गई। किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज की गई? मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट के द्वारा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन ऑफ द विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल, अभी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स डॉक्टर मनसुख मांडविया जी इन्होंने प्रेजेंट किया नेशनल यूथ अवार्ड्स को फॉर इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरीज। क्वेश्चन है कि कैश प्राइज कितना है अवॉर्डेड टू ऑर्गेनाइजेशन अंडर दिस नेशनल यूथ अवार्ड? तो ऑर्गेनाइजेशंस को 3 लाख रुपए का कैश प्राइज यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूव किया यूज़ ऑफ आदिलाबाद एयरफील्ड फॉर सिविल एयरक्राफ्ट ऑपरेशन। ये जो एयरफील्ड है ये किस स्टेट में लोकेटेड है? तो ये आपकी तेलंगाना में लोकेटेड रहेगी। नेक्स्ट, अभी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इन्होंने लॉन्च किया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंटर मिनिस्ट्रियल साइंटिफिक स्टडी न्यू दिल्ली में अंडर नेशनल वन हेल्थ मिशन। जो प्राइमरी एम है इनिशिएटिव का वो क्या है? इट इज टू डिटेक्ट जूनोटिक डिजीज। जूनोटिक डिजीज कौन सी डिजीज होती हैं? जो कि एनिमल जिनके पास पोटेंशियल होता है टू ट्रांसफर फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस, उनको जूनोटिक डिजीज कहते हैं और उन वायरसेस को जूनोस वायरस कहते हैं, राइट। तो इन जूनोटिक डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए ये यहाँ पे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, नेम द 2 साइट्स जिनको डिक्लेयर किया गया प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स बाय द हरियाणा हेरिटेज एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट बिकॉज ऑफ देयर एसोसिएशन किसके साथ? हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ। तो वो 2 साइट्स कौन सी हैं? वो है टिग्राना एंड मित्थल। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो उस डिजिटल प्लेटफॉर्म को जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय कॉनरेड के संगमा जी के द्वारा लॉन्च किया गया 4 अप्रैल को टू स्ट्रीमलाइन द डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड रिलीफ प्रोसेसिंग एंड फंड डिसबर्समेंट मेघालय स्टेट में। तो उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? वो है डिजास्टर एंड रिलीफ मॉनिटरिंग सिस्टम। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफशोर पेट्रोल वेसल ऑफ द इंडियन नेवी को फ्लैग ऑफ किया गया बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा फ्रॉम करवर नेवल बेस? तो वो है INS सुनायना। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम ने भी एसेंट दिया टू इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल ऑफ 2025 जिससे सिक्योरिटी बढ़ेगी। एंड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मैक्सिमम फाइन कितना लगाया जाएगा फॉरेनर्स पर जो एंटर करेंगे इंडिया में विदाउट अ वैलिड पासपोर्ट या ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स? तो मैक्सिमम 5 लाख रुपए की पेनल्टी या फिर 5 साल तक की जेल इम्प्रिजमेंट। नेक्स्ट, मेंशन द नवरत्ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर जिसने कंस्ट्रक्ट किया 2.07 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज इन रामेश्वरम तमिलनाडु जो इनॉग्रेट किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो
कौन सी वो है वो नवरत्ना कंपनी? वो है रेल विकास निगम लिमिटेड। फिर आ जाते हैं उस एक्सरसाइज का नेम बताओ जो इंडियन आर्मी ने सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया अपना मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग यूनिट कैपेबिलिटी को, कंडक्टेड बाय द ट्राई शक्ति कॉर्प्स इन इंडियाज ईस्टर्न थिएटर। तो उस एक्सरसाइज का नाम बताओ, वो है एक्सरसाइज सर्व शक्ति। नेक्स्ट, नेम द डिजिटल टूल जो लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा इन अप्रैल टू सपोर्ट द एस्पायरिंग लखपति दीदीज डेवलपमेंट अंडर द ऑपरेटिंग सिस्टम लो कोएस ड्यूरिंग द पोस्ट बजट कंसल्टेशन वेबिनार, जो इन्वॉल्व करेगा स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन को। तो उस डिजिटल टूल का नाम क्या आपसे पूछा गया है? तो वो है डिजिटल टूल। क्या नाम रहेगा उस डिजिटल टूल का? वो है एंटरप्रेन्योरशिप प्लानिंग डिजिटल टूल। नेक्स्ट, अभी जीआई रजिस्ट्री जो कि डीपीआईआईटी के अंडर आती है, इन्होंने जीआई टैग दिया टू अमलसद चीकू। ये अमलसद चीकू हॉर्टिकल्चर फ्रूट कैटेगरी में इसको दिया गया है एंड ये गुजरात से बिलोंग करता है ये प्रोडक्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इज आवर होमवर्क सेक्शन। फर्स्ट, व्हेन डू वी ऑब्जर्व नेशनल डॉक्टर्स डे? गिव मी द डे, द थीम ऑल्सो। सेकेंड, वर्ल्ड zoonosis day, the day and the theme also. Third, chartered accountant day, the day, edition and the theme. Fourth, tell me recently name the biography of Dalai Lama that has been recently released and the author also. Fifth question, tell me recently who became the first Indian actress to honored on the Hollywood Walk of Fame of class 2026. Name that actress. So these are your 5 homework questions, students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video.